The area of circle is 25 pi square centimeter. Find the length of arc subtending an angle of 144 degrees at the center. Also find the area of corresponding sector. अभी यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया है और ये सेंट्रल एंगल सबटेंडेड कितना दिया है 144 डिग्रीज। तो पहला हम और हमें क्या क्या फाइंड आउट करने का है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है एंड लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। सो एरिया एरिया ऑफ सर्कल is equal to 25 pi. So we know that area of circle is what? Pi r square. That is equal to 25 pi. So pi get cancelled. R square is equal to 25. So therefore R is equal to 5 centimeter. ये 5 centimeter है. Now angle subtended theta is equal to 144 degrees. तो अब हम इसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे 144 into pi upon 180 radians, that is equal to 4 pi upon 5 radians. ये कन्वर्ट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ आर्क। देखो ये लेंथ ऑफ आर्क है। यस लेंथ ऑफ आर्क is equal to is equal to r theta. R is equal to 5 into 4 pi upon 5। तो ये कैंसिल होगा तो हमें मिल गया 4 पाई सेंटीमीटर। सो नाउ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर। अभी हम फाइंड आउट क्या करने का है एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज ये एरिया ऑफ सेक्टर है। दिस इज आवर एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हाफ into radius into length of arc. So half into 5 into length of arc is 4 pi 4 pi. So this will become the 2 to the 4. So area of sector is 10 pi square centimeter. So please subscribe the channel.